Okay, so in the last lecture, we have discussed regarding the ROM. Okay, so what is a ROM? Can you tell me what is a ROM? ROM stand for Read only Read memory. read only only memory. memory. So in the read only memory, we store only the program. So it is also called as program memory. It is also called as a code memory. Okay, so that ROM can be connected. Generally, ROM has two different variant. One is called as the internal ROM, and second one is called as the external ROM. So that internal ROM and external ROM can be connected in a combination of three different scenarios. So we have got scenario one, scenario two, scenario three. Scenario one says that only the internal ROM will be connected. So if we connect the internal ROM, in that case, the total ROM space that we have, what would be size of the total ROM in case of only internal ROM if it is connected? The size would 4 be KB. 4 KB, and the starting address would be 0000H, and the last address would be 0FFH. Okay, so that is the scenario one. In that case, the content of EA bar should be made as 1. 1 because we don't want to discard the internal ROM. We have to use it. So in order to use it, EA bar the content should be made as 1. Then we have got the second scenario. Second scenario, mein what we have to do? We have to combine the internal ROM with the external ROM. So in order to achieve that, we have to make the content of EA bar again as 1. But over here, once the internal ROM gets full or it gets filled, we have to connect the external ROM. So the total external ROM that is supported in second scenario would be, what would be the size for the external ROM in scenario 2? 60 KB. It is 60 KB. Why 60 KB? Because the total size that is being supported, the total size which is being supported by the ROM is 64 KB. So 64 KB ka jo 4 KB is there, that 4 KB comes from the internal ROM. So the internal ROM eats up the external ROM. So external ROM में जो 64 KB था, उसकी 4 KB का जो जगह है, that is being eaten up by the internal ROM. So the remaining, which is the 60 KB, that is being 60 KB is taken from the external ROM. So we'll look into the address. So the internal ROM that we have, that internal ROM starting address is, what is the starting address of the internal ROM? It is 000H. 4000H, and the ending address is 0FFH is the ending address of the internal ROM. Okay, fine with that. The external ROM that we can connect after this would be, what would be the starting address? External ROM ka 1000H. 1000H, and the last address of this external ROM would be 4 times FH. 4 times FH. Okay, I hope this address is clear to you. Okay, so ये आपका सिनेरियो नंबर 2 हो गया, लेकिन सिनेरियो नंबर 2 में अगेन द कंटेंट ऑफ EA बार शुड बी मेड एज, EA बार का कंटेंट क्या होना चाहिए? 1. 1 1. So that is the second scenario. The last scenario is that we have to have only the external ROM. उसके अलावा और कुछ भी मेमोरी हम यूज नहीं करेंगे. Okay, so in that case what we need to do, हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल रॉम कनेक्ट करेंगे और इंटरनल रॉम को पूरी तरह से डिस्कार्ड करेंगे. सो द पिन व्हिच डिसाइड्स व्हिच मेमोरी हैज टू बी डिस्कार्डेड और द इंटरनल रॉम हैज टू बी डिस्कार्डेड, दैट पिन इज कॉल्ड एज EA बार. सो EA बार की कंटेंट को विल मेक इट एज 0. On making EA bar as 0, the internal ROM is completely discarded. Okay, so only the external ROM will be made available. But since we have got a 16-bit का data address bus का size is 16-bit, this total memory that is being supported by a 16-bit memory bus or a 16-bit address bus is equal to 64 KB. So जो external ROM आपको जो connect करना है, उस ROM का जो size होगा, that has to be 64 KB. उसके ऊपर नहीं जा सकता. So that is why in the scenario 3, the external ROM which is being supported or the external ROM which we connect, it has the size 64 KB. Okay. So उसका starting address would be 0000H, and the last address would be 4 times FH. Okay, so that is the starting address and the ending address. So by looking all at the three scenarios, what is the minimum ROM which is available for the entire system? What can be the minimum ROM that should be available? At least that much should be available. What is the minimum size of the ROM that is available?
सारे सिनेरियो में हर एक सिनेरियो को अगर आप पकड़ोगे तो मिनिमम जो सब अवेलेबल होगा वो साइज का होगा 4 KB. ROM का, it is 4 KB, and the maximum size of the ROM that is available is 64. 64 KB. Okay, so that is all related to ROM that I want to talk about. Okay, the next topic that we'll be discussing is called as the next topic that we'll be discussing is called as RAM. Okay, so write down the next topic as RAM. Write down the full form of RAM. RAM is random access machine. Sorry, read random Random access memory. random access memory. Sorry, my bad. Yeah, random access memory. So write down about RAM. So RAM is also called as the data memory. RAM is also called can also be called as a data memory. Why it is called as data memory? Because it stores only data. Because it stores only data. So again, RAM has two combination. Okay, so RAM is of two different variant. One of the memory of RAM is called as the internal RAM, and second RAM is external RAM. Okay, so we have got two different form of RAMs. One is called as external RAM, and second is called as internal RAM. Okay, so write down that. In 8051, a RAM is of two different variant. One is called as the internal RAM and other is called as the external RAM. Fine. Is it clear? Yes. Okay. So I'll just draw the diagram how it can be connected. So this RAM can be connected in the following format. Okay. So over here, I have to use either only the internal RAM या अगर इंटरनल रैम को यूज किया मैंने उसके साथ में अगर मेरे को एक्सटर्नल रैम भी कनेक्ट करना है आई कैन कनेक्ट एक्सटर्नल रैम एज वेल. ओके, सो मेरे पास दो ही सिनेरियो, या तो इंटरनल रैम है या तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रैम है, उसके अलावा कोई और सिनेरियो नहीं है. ओके, इज इट क्लियर? सो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रैम मुझे यूज करना ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, आई कैन नॉट डिस्कार्ड इंटरनल रैम ओवर हियर. ओके, सो डिस्कार्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इंटरनल रैम यूज करूंगा तो इंटरनल रैम ही यूज करके मेरा काम अगर हो जाता तो मैं इंटरनल रैम ही में सेटिस्फाइड हूँ. आई डोंट वांट टू ऐड एक्सटर्नल रैम. लेकिन हाँ, अगर मैं एक्सटर्नल रैम यूज करना चाहूंगा दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करते. ओके, सो नाइदर इंटरनल रैम इंटरफियर्स द एक्सटर्नल रैम, ना एक्सटर्नल रैम इंटरफियर्स द इंटरनल रैम. व्हाट वी हैव लुक्ड इन द प्रीवियस केस, अगर आप एक एड्रेस देते थे जैसे 1123 एड्रेस अगर आपने दिया था लास्ट टाइम, सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे होगा. सो 1123 इसकी सिनेरियो में होता है क्योंकि जनरली ये जो है इट इज नॉट लाइक इट इज एन इंटरनल रैम. ये इंटरनल रैम में नहीं है, तो इंटरनल रॉम में नहीं है ये एड्रेस, इंटरनल रॉम. ओके, सो आपको क्या but over here there is no such confusion. Why there is no such confusion? Because the internal RAM, let's say this is the internal RAM and this is the external RAM. Okay, the internal RAM has the address bus
Are you able to hear me, guys? Yes, sir. Okay, so what was the last point that we discussed? कहाँ तक आपने लास्ट पॉइंट सुना था? क्योंकि मुझे पता नहीं कनेक्शन कब लॉस हुआ, कोई बता सकता है? What was the last point that we were discussing? We were discussing the combination of internal plus external RAM. ये डिस्कस कर रहे थे? Yes. Okay, so if we look at the combination of the RAM, if we look at the combination of the RAM, the combination that it support is either there is only two combination. Okay, there is only two scenarios. Scenario one क्या है? या तो मैं सिर्फ और सिर्फ internal ROM कनेक्ट करूँ. सर आपकी Okay. स्क्रीन विजिबल नहीं है. Okay, sorry, my bad. Okay, so scenario one क्या कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ROM को यूज करूं. Okay, so scenario one says that I'll be using only internal ROM. और scenario two जो है वो कहता है कि I'll be using combination of internal ROM plus external ROM. Okay, there is no scenario three. Scenario three नहीं है. So internal ROM plus external. RAM, sir. Sorry, my bad. RAM. So internal plus external RAM. ये scenario 2 बोलता है मुझे, ठीक है? There is no scenario 3, so I cannot discard the internal RAM completely. Internal RAM has to be used guaranteedly, okay? But still scenario 1 और scenario 2 exist होता है, लेकिन आप इसको differentiate नहीं कर पाते कि scenario 1 है या scenario 2 है. क्यों differentiate नहीं कर पाते? Because they can happily coexist, okay? So इसलिए हम इंटरनल रैम का अलग सिनेरियो बना देंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का अलग सिनेरियो बना देंगे. ऐसा सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. सिनेरियो वन, सिनेरियो टू बोथ कैन को एग्जिस्ट. नो मेमोरी विल गेट कंफ्यूज या प्रोसेसर विल नॉट गेट कंफ्यूज या ये पिन करके कोई पिन नहीं होगा जो डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन डिफरेंट सिनेरियो. सो that is why there is no such scenarios over here. Okay, so the general combination that I can have is that I'll be either using internal RAM. इंटरनल रैम मुझे किसी भी हालत में यूज करना ही है, लेकिन अगर बाई चांस मैं एक्सटर्नल रैम को कनेक्ट करना चाहूँ वो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ. ओके, बिकॉज जो इंटरनल रैम है उसका जो एड्रेस बस जो सपोर्ट करता है दैट इज 8 बिट ओनली, वेयर एज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल रैम द एड्रेस बस व्हिच इज बीइंग सपोर्टेड इज साइज ऑफ 16 बिट. इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका? तो एड्रेस बस इस केस में 8 बिट का होगा, वेयर एज इन दिस केस द एड्रेस बस का साइज इज 16 bit. So if I say now let me put the question. If I say move the data, RAM में क्या स्टोर होता है, डेटा या प्रोग्राम? डेटा. Okay, so if I put, yeah, good. So move A, if I say move A from a location, let's say 25H location से डेटा को मूव करो into A register. So which memory I am talking about? Which RAM I am talking about? 25H. That location would be present where? Will it be there in internal? RAM. Will Internal it be there in internal RAM, or will it be there in external RAM? Why internal? Why not external? 25H cannot be there in external RAM. Because sir, Yeah, it is not 8-bit data. It is 8-bit address. Okay, so this is an address. I have said कि 25H location पे 25H location पे data है उसको आप A में डालो. So because the 8-bit address बस use कर रहे हैं हम, तो 8-bit का जो 25 is 8-bit का address. So 8-bit का address is generally there in the internal RAM. Okay, but if I say कि move the data from the location 0025H into A register, so that would be, अगर मैंने एड्रेस दिया 0025H, so that address is a 16-bit address. तो 16-bit address जो है वो सपोर्ट कौन करता है? एक्सटर्नल रैम.
सो एक्सटर्नल रैम से हम जो डेटा रहेगा उसको हम लेके ए में डालेंगे. सो विल जस्ट लुक एट द starting address of internal RAM. So what would be the starting address of the internal RAM? Can you tell me, guys? 00H. So it is 00H. Why 00H? Because it supports only 8-bit characters. Okay. The last address is 7FH. 7FH. Okay. Why 7FH? Because the size of the internal RAM is 128 byte. Okay. So 128 byte अगर size है आपका, तो 128 byte के unique location के लिए we require 7 bits. So 7 bits का starting address would be 7 zeros. Okay, and the last address would be 7 ones. Okay, so this 7 ones is this is F, and this is 7, and this is 0, and this is also 0. Okay, so that is what we have got over here. So the starting address is 00H and the last address would be 7FH. Is it clear? This point is clear to you? Yes. Okay, what about the external RAM? External RAM ka size would be, will it be 60 KB? Will it be 64 KB? 64. Why 64 KB? Why not 60 KB only? That happened in the case of the scenario 2 of the ROM. वहाँ पे 60 KB गई था, यहाँ पे 64 KB का कैसे होगा? Because 16-bit. Because we have got the dedicated address bus which will be there for external RAM. Okay, so we don't have to have the 8-bit का address bus जो मैं use करूँगा external RAM के लिए. External RAM का address bus अलग है. Altogether it is different address bus. Whereas internal RAM ka altogether the address bus that I'm using, that is different one. Okay, so there is no confusion ki there is no mix up between the address bus. So internal RAM will not eat up the space of the external RAM because both are different entity over here in this case. Okay, so इसके लिए पूरा का पूरा 16 बिट का जो एड्रेस बस है that is dedicated to the external RAM. So 16 बिट का एड्रेस बस है, इसके लिए जो साइज होगा एक्सटर्नल रैम का that would be 64 KB. Is the size clear to you? Is the size clear? So the starting address would be 40H and the last address would be 4FH. 4FH. Okay, so just write down, just give me the answer. What is the minimum size? What is the minimum size of RAM that is being there in 8051? What is the minimum size of RAM which is there in 8051? 128. 128 bytes. Okay, what is the maximum size of RAM which is there in 8051? What is the maximum size of RAM supported by 8051? 64 kilobyte plus 128 byte. Exactly, yeah. So the maximum size which is available is 64 kilobyte plus 128 byte. Okay, so that is that is what I wanted to ask. Is it clear now? Is this combination clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Fine. So that's the end of the RAM part. That's the end of the ROM part. So memory organization has been covered. Next topic that we'll be discussing is called as, we'll be discussing only this part. Okay, सिर्फ internal RAM को discuss करेंगे. Okay. So again, it is part of memory organization only. लेकिन ये एक specific topic है जो आपको exam में पूछा जाएगा. Okay. So write down the topic as the internal memory organization of internal RAM. Write down the topic as memory organization of internal RAM. Okay. Memory organization of the internal RAM. I will just draw the diagram over here. Okay. Fine. So अगर आपको याद होगा, it has, the internal RAM has multiple banks. Okay, so first we have bank 0, then we have bank 1. कितने बैंक होते हैं? 4. 4. So bank 1, bank
2, and then we have bank 3. Okay, ये बैंक होने के बाद after having all this bank, I'll be having a bit addressable RAM. So यहाँ पे क्या करना है मुझे? I will just draw some squares over here. Just partition them into 8 columns, okay? And again partition them into 8 rows. Sorry, 16 rows. Okay. So the number of columns that we have is 8 columns, and the number of rows that we have is 16. So 16 cannot be displayed over here. So just draw dots over there. And finally, we have got the last space. Okay. So mote taur pe, I will just call these regions. So this is the first region. So this region will hold what? Registers, right? इसके अंदर सारे registers हैं. So bank 0 में कितने register होते हैं? How many register does bank 0 have? 8. Similarly, bank 1 will also have 8 registers. Bank 2 will also have 8 registers. Bank 3 will also have 8 registers. So these registers are called as, what are these registers called as? Called as general purpose register. So write down the first part. The first part is called as the general purpose registers. Okay. Is it clear? Is the first region clear to you? So this is region number 1. Region number 1 is called as GPR. Then we have got this region. This is called as bit addressable RAM. ये क्या है हम धीरे धीरे समझ में आएगा. ऐसा अचानक से अगर आप देखोगे आप नहीं समझ में आएगा. We'll just look into that. Bit addressable RAM. And this is region number 2. This is region number 2. And finally we have got the third region. Okay, so this is called as scratch pad. Okay, I am not able to write it properly. This is PAD, okay, scratch pad RAM, or it is also called as general RAM. The second name is also called as general RAM. And this is region number 3. Is it clear? So how many region does internal RAM has? कितने region होंगे internal RAM के पास? 3 region. The first region is called as the general purpose region. The second region is called as the bit addressable RAM, and the third region is called as either scratch pad RAM बोलो उसको आप या general RAM बोलो. Okay, इन दोनों नाम से आप उसको बुला सकते हैं. Fine with that part. The first part, is it clear? So whenever we draw the architecture, whenever we draw the internal of the RAM, we have to show in 3 different regions. Okay, can anybody tell me what is the exact time right now? 10:13. 13 or 30? 10:13. Okay, fine. So we have got plenty of time. Fine, we'll be able to cover this topic. Okay. So general purpose region जो है आपका, general purpose region, we'll start with the first region, region number 1. Region number 1 says that there is a general purpose register. General purpose register क्यों use करते हो? Why we use general purpose register? In order to perform any task. अगर आपको multiply करना है, divide करना है, add करना है, अगर आपको 2 नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर आपको रोटेट करना है, अगर आपको सॉर्ट करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है डेटा के ऊपर, जनरली
ये वाला जो पार्ट है आपका यानी रीजन 1 वाला जो पार्ट है उसको आप यूज करते हो. ओके, सो 8086 में वी हैव गॉट ओनली 4 रजिस्टर. ओवर हियर वी आर हैविंग हाउ मेनी रजिस्टर्स? हाउ मेनी रजिस्टर्स वी हैव? 32. 32. Okay, now we'll just look into the address. So please pay attention, the address is very important. So the starting address would be, what would be the starting address? Starting address of RAM would be 00H. What would be the last address of the RAM? Would be internal RAM. We are talking about only internal RAM. 7FH. It is 7FH. Okay, so starting address, last address would be 7FH. Is it clear? RAM ka? Is this address clear to you? 00H or 7FH Yes, clear hua na? Okay. Now we'll go into the banks. Bank has different registers. So let's say the first register we have is called as R0. उसके बाद we have second register. The second register would be R1. उसके बाद R2 होगा, R3 होगा. What would be the last register of this bank? R7. R7. The next register, the last register of the bank would be R7. What about bank 1? Bank 1 का starting register would be R0. R0. Second register would be R1. And the last register would be R7. Okay. Again, the starting register would be R0. The last register would be R7. In bank 3 also, the starting register would be R0. And the last register would be R7. Okay, clear with that part? Is it clear? yes. Now tell me, what is the size of each register? What would be the size of each register? हर रजिस्टर में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो? Come on, tell me. The size of each register would be हर एक, because it is a memory location. एक memory location है. एक memory location पे आप generally कितना स्टोर करते हो डेटा? 1 byte. 8 bit. 8 bit या 1 byte बोलो. Okay, so we'll be storing only 8 bit of data. So 32 registers है और हर एक register में अगर आप डेटा स्टोर करोगे तो total data at a time कितना सपोर्ट करेगा? 32 byte of data will be supported. Clear with that part? Clear with that part? Yes. Okay, so general purpose region यानी ये वाला जो region है आपका उसका size क्या होगा? What would be the size of this region? The total size was 128 byte. जनरल पर्पस जो आपका ये है जनरल पर्पस रजिस्टर उसका जो रीजन है उसका साइज क्या होगा? आउट ऑफ 128 बाइट हाउ मेनी बाइट विल बी यूटिलाइज्ड बाय रीजन 1? 32. It is 32 byte. So just write down in general purpose register or the region 1, the size of the region 1 will be 32 byte. Okay, now R0 का alternate address is 00H. R1 का एड्रेस क्या होगा? What would be the R1 का एड्रेस of bank 0? R1 का एड्रेस क्या होगा? R0 00H था. Starting address is 00H. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, this is the starting address. This R0 has the address of 00H. Now tell me the address of R1. R1 register का address 01H. 01H. R2 का क्या होगा? 10H. R2 02H. 02H. R3 का 03H. 03. What about R7? This R7, it will be 7H. 07H. Okay, so bank 0 जो है आपका, बैंक 0 का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? The starting address of bank 0 is 00H and the last address is 07H. Is it clear? Is this part clear? Is this part clear? Yes. Yes. Okay. Now we'll go to the bank 1. Bank 1 का R0 register का एड्रेस क्या होगा? What would be the 08. it would be 08H. So R0 of bank 1 has the address of 08H. R1 का एड्रेस क्या होगा? R1 will be 09H. 09H.
R1, are you able to hear me? Yes. या उसके बाद R2 का एड्रेस क्या होगा? 09 के बाद क्या आता है? A. A. So similarly R7 का एड्रेस क्या होगा? Just tell me the address of R7. 0FH. 0FH. कैसे आया? जिनको नहीं समझ में आया, so 8 08 के बाद 09, 09 के बाद A, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F. So ये 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8 डिफरेंट रजिस्टर्स के 8 डिफरेंट एड्रेस होते हैं. So for the address of R7 we'll be having we have the address as 0F. Is this address clear to you? 0F कहाँ से आया? Rest of you guys, is it clear? Yes, sir. Okay. Now we'll talk about bank 2. Bank 2 का जो R0 register है, okay? Bank 2 का जो R0 register है, what would be the address of the R0 register of bank 2? 0FH के बाद क्या आता है? What would be the address of R0 register of bank 2? Come on, tell me fast. Jaldi. Am I audible? Am I audible? 10H. So it is 10H. So 0F के बाद 10H आएगा. उसके बाद अगर यहाँ पे R1 है तो R1 का एड्रेस क्या होगा? What would be the address of R1? 11H. तो similarly R7 का एड्रेस क्या होगा? This R7 का एड्रेस क्या होगा? What would be the address of R7? 17H. Okay, so that is the address of R7. R0 of bank 3. What would be the address of R0 of bank 3? It would be 18H. And what would be the address of R7H? R7 of bank 3. R7 register का address क्या होगा of bank 3? It would be 1FH. Is it clear? Is this part clear? So जो जनरल पर्पस रजिस्टर है आपका, जनरल पर्पस रजिस्टर का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 00H है और जो एंडिंग एड्रेस है ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इज 1FH. Is it clear? These address are very important. Okay, so if you feel like कि ये क्या पढ़ा रहे सर, I'll just come to that point. The point is, ये रजिस्टर को आप या तो उसके नाम से आप बुला सकते हो. Okay, so if I call it as R0, I can perform the operation. So R0 और R1 के बीच में अगर मुझे मूव करना, I can do that. R0 से लेके R3 के बीच में अगर मूव करना, I can do that. R0 और R0 के बीच में मुझको डेटा को मूव करना है, यानी बैंक 0 के R0 से डेटा लेके बैंक 2 के डेटा के R0 के अंदर अगर मुझे मूव करना है, is it possible? Between two R0s, is it possible? Am I audible, guys? Yes. हाँ, so what I wanted to say is कि बैंक 0 के अंदर एक रजिस्टर है जिसका नाम R0 है. Let's say this is the register R0 which is there in bank 0. वो बैंक 0 का जो रजिस्टर है R0 वो मुझे मूव करना है into बैंक 1 के R0 में. Can I do this operation? At a time, how many banks you can get activated? कितने बैंक को आप एक्टिवेट कर सकते हो? At a given time, only one bank can be activated. So बैंक 0 से बैंक 1 के अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर पाओगे क्या? Is it possible? No. No. So in such scenarios, it is not possible because at a time only one bank is activated. And how to activate those bank? बैंक को एक्टिवेट कैसे करते हो? With the help of which register? कौन से रजिस्टर के अंदर आप चेंज करते हो? कौन से रजिस्टर में चेंज करते हो? That register is called as PSW. What is the full form of PSW? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में से कौन से बिट को आप चेंज करते हो आप बैंक सेलेक्ट करने के लिए?
one is called as RS1 and the second one is called as RS0. So in order to change the content of RS1 and RS0, I'll be able to make sure कि मैं कौन से बैंक को activate कर रहा हूँ. So at a time, is it possible to activate 2 banks at a time? No. So basically अगर आप देखोगे तो ये जो अगर आपका ऑपरेशन होगा which is move R0, R0, so ये possible नहीं है because R0 are there, R0 are 2 different registers. We know that there are 4 different R0s, but at a time only one R0 will be activated. So this will become an illegal statement. Okay, but यही operation with the help of the address I can achieve. Okay, इसका मतलब क्या है? बैंक 0 का R0. What is the address of बैंक 0 का R0? What is the address of बैंक 0 का R0? 00H. It is 00H. ये लोकेशन से मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है कहाँ पे? बैंक 1 के R0 के पास. What is the address of बैंक 1 के R0 का? 08H. 08H. Okay, so this I can do. Okay, so with the help of address I can achieve that. So what I said last time, between the bank operation is not possible, but that is true when we are performing with the help of the naming of the registers. Register के नाम से अगर आप ऑपरेशन करोगे, so between the bank it is not possible. But अगर आप address use करोगे, that is possible. Between any of the register, between any of the banks, you can perform the respective operation. तो अगर बैंक 0 से बैंक 3 के बीच में अगर आपको ऑपरेट करना है, you can do that. But in that case, instead of using the register's name, you will be using what? The register address. Is it clear? Is the concept clear? Is the concept clear? So if I want to perform add, I want to perform an add operation of R1 with R7. अगर मैं ये करना चाहूंगा तो ये एक बैंक का होगा. This will happen for only one bank. This will happen only for one bank. तो जो भी बैंक एक्टिवेट होगा, let's say 0 एक्टिवेट होगा, तो R1 of 0 bank will get added with R7 of 0 bank. Okay, so ये होगा. लेकिन अगर मान लो मुझे क्या करना है, बैंक 1 का R1 को ऐड करना है बैंक 3 के R7 के साथ. Okay, so this is for bank 1 R1 and R7 is of bank 3. इनके बीच में मुझे ऐड करना है. Okay, so this operation cannot be done with the help of the naming of the register. In order to perform this operation, you have to give the address of the register. So tell me the address. R1 का address क्या होगा? 09H. 09H. Bank 1 के R1 का address will be 09H. What about Bank 3 के R7 का address? Bank 3 के R7 का address would be 1F. 1FH. So इनके बीच में I can perform the add operation. इनके बीच में I can perform the add operation. Is it clear? Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, I'll just erase this part. So अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने क्या देखा? What we have seen till now? हमने क्या देखा कि जो आपका RAM है, it is divided into 3 different region. पहले region को हम general purpose RAM बोलते हैं, general purpose register RAM बोलते हैं. Second region को हम क्या बोलते हैं? What we call the second region? Bit addressable. Bit addressable RAM. The third region that we have is called as the scratch pad RAM या general RAM बोला. Okay, so the general purpose register RAM जो है आपका 8051 supports 32 different types of general purpose register RAM. But these 32 register that we have, it cannot be have the name of R0 to R31 because it can increase the size of the instructions. Okay, so उससे क्या होगा? Decoding will become difficult. So what we do is, instead of naming them from R0 to R31, we'll name them or we'll group them into 4 different banks. So हर बैंक में 8 register होगा. That 8 register would have the name from R0 to R7. Okay, so such banks, how many banks are supported in general purpose register? उस region में कितने बैंक होंगे? 4 बैंक होंगे. The first bank is bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. बैंक 0 का जो एड्रेस होगा
It starts from 00H, it goes up till 07H. Okay, bank 1 का starting address would be 08H, it will go up till 0FH. Bank 2 का starting address would be 10H and it will go up to 17H, and bank 3 का starting address would be 18H and it will go up to 1FH. Okay, so each bank has a size of, what is the size of each bank? 8 bytes. So the total size of the GPR or the region 1 would be 32 byte. Is that thing is clear to you? The first region, is it clear to you? Yes. Now we'll go to the second region. Second region में the size is we have got 16 rows. Okay, 16 locations है इसके अंदर. So 16 location पे हर location पे कितना data store होता है? हर location पे कितना data store होगा? On each location we have got 16 such location over here. हर location पे कितना data store होता है? 8 bit. Okay, so ये total size कितना हो जाएगा? 16 byte. Okay, so please write down. The region 2 has a size of 16 byte. Region 2 has a size of 16 byte. So it is called as a bit addressable RAM. Region 2 has a size of 16 byte. Okay, so अगर 16 byte होगा, so ये जो location है, ये यानी ये पूरा जो row है आपका, okay, उस row का address क्या होगा? 1F के बाद क्या address आएगा? The starting address of the bit addressable RAM would be 20H, and what would be the last address of the bit addressable RAM? Last address क्या होगा? What would be the last address? 3FH. 3FH or 2FH? Count 16 times after 20. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2. कितना आएगा? 2FH. 2FH. It would be 2FH. Okay, so the last address would be 2FH. Clear with that part? ये part समझ में आया? So the bit addressable RAM has a size of 16 byte. 16 byte का जो starting address होगा bit addressable RAM का, that would be 20H, and the last address would be 2FH. Is the address clear to you? Is the address clear to you? Yes. Yes. Okay, so the remaining size or the जो बाकी बचा हुआ है, that will come into region 3. So region 3 का starting address would be, the starting address of the region 3 would be 30H, and the last address would be 7FH. So can you tell me the size of this particular part? क्या size होगा? ये 16 byte का हो गया, ये 32 byte का हो गया. Total size is 128 bytes. So 128 minus, perform this operation. Minus 32 minus 80. 16 कितना होगा? 80. So this size or this scratchpad RAM has a size of 80 byte. Okay, so these are the different sizes that we have. Is this region ka size clear to you? Yes. Okay. Yes. Now the most important part which is left is called as bit addressable RAM. Bit addressable RAM होता है क्या? Okay, scratchpad RAM मैं आपको बता देता हूँ. Scratchpad RAM जो आपका 80 byte का जो आपका स्पेस है, इसके अंदर जनरली आप कुछ भी नहीं करते हो. यहाँ पे जनरली अगर आपको कोई भी यूजर को कोई भी चीज अगर डेटा स्टोर करना है, वो उसके लिए रहता है. उसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, वो कुछ भी स्टोर करना चाहे वहाँ पे स्टोर कर सकता है. जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर का काम क्या है कि अगर कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करना होगा बिटवीन रजिस्टर, सो आपको जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा. Whereas स्क्रैचपैड रैम का जो काम है, उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक टास्क नहीं है. ओके, अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, कोई भी आप 80 बाइट तक का डेटा, कोई भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर. ओके, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टास्क. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जनरल रीजन और जनरल रैम. ओके, या स्क्रैच पैड रैम, उसको कुछ भी बोल सकते हो. आप स्क्रैच कर सकते हो, फिर लिख सकते हो, फिर काट सकते हो, फिर लिख सकते हो. फिर डज नॉट हैव रिलेवेंस टू अस. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो जनरल पर्पस रीजन हो गया. उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज बिट एड्रेसेबल रैम. सो राइट डाउन अबाउट बिट एड्रेसेबल रैम. राइट डाउन अबाउट बिट एड्रेसेबल रैम. बिट एड्रेसेबल रैम है क्या? सो बिट एड्रेसेबल रैम जो है आपका, ये वो रैम को बोलते हैं जिसके अंदर हर एक बिट आप एड्रेस कर सकते हो. ओके, सो आई कैन से दिस इज 1
bit of a RAM. I can also store the data in one of the bit of the RAM. I can also store one bit in this RAM. मैं यहाँ पे कोई bit को use कर सकता हूँ, ये कोई bit use कर सकता हूँ. So I can address each of the bit within this RAM. Okay. यहाँ पे जो register था आपका, you were addressing the whole register. यानी आप एक time पे पूरे के पूरे 8 bit को use कर रहे थे. यहाँ पे जो benefit आपको मिलता है कि आप हर एक bit को आप एड्रेस कर सकते हो. ओके, सो अगर लेट्स से मैं उसको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ये वाला बिट को मुझे एड्रेस करना है, तो इसका कुछ लोकेशन होगा. मैं चाहूँ तो अगर इस बिट को एक्सेस करना चाहूँ तो इसका लोकेशन देके इस बिट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ. यहाँ पे कोई लेट्स से कोई बिट है, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसका लोकेशन देना पड़ेगा. क्लियर विद दैट पार्ट? इज इट क्लियर? तो अगर मेरे को बिट स्टोर करना है तो मैं बिट एड्रेसेबल रैम में स्टोर करूंगा. अगर मेरे को बाइट स्टोर करना है तो मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? जीपीआर में यूज करूंगा. Is it clear? Yes. Okay. So basically अगर मेरे को बिट स्टोर करना है तो मैं बिट एड्रेसेबल रैम में डालूंगा, लेकिन उस हर एक बिट का will there be some address? Will there be some address? Yes. तो ये बिट का एक अलग एड्रेस होगा, इस बिट का अलग एड्रेस होगा, इस बिट का अलग एड्रेस होगा, हर एक बिट का कुछ ना कुछ अलग एड्रेस होगा, राइट? So we'll just try to find out the address of each bits. Okay? हम हर एक बिट का एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो ये जो आपका लेट्स से पहला बिट है, द एड्रेस ऑफ दिस बिट वुड बी, फर्स्ट टेल मी हाउ मेनी बिट्स विल बी हैविंग. कितने बिट्स होंगे टोटल? बिट एड्रेसेबल रैम में बिट्स कितने होंगे? 28. हाउ मच bits will be having it? 128. 128 bits. Okay. बाइट यानी आपका जो रैम था, उस रैम के अंदर टोटल बाइट्स कितने थे? हाउ मेनी बाइट्स वी यूज्ड टू हैव इन रैम? वो भी 128 था. रैम का साइज कितना था? 128 वो भी था. The starting address of your RAM was 00H. So the bit का भी starting address क्या होगा? What would be the starting address of the first bit? Can it be 00H? It will be 00H, right? उसके बाद नेक्स्ट वाले बिट का एड्रेस क्या होगा? 01. उसके बाद वाले का एड्रेस क्या होगा? 02. What would be the last address of this particular bit? ये बिट का एड्रेस क्या होगा? 0, 7. उसके बाद ये बिट का एड्रेस क्या होगा? What would be the address of this bit? 08. 08. What would be the address of this bit? 0F. 0F. यहाँ के जो बिट है उसका क्या साइज होगा? एड्रेस होगा 1, 0. 0. It will go up till 17. Now tell me the address of this one, or the last bit का address of the bit addressable RAM. Total 128 bit है. Starting address is 00H. What would be the last address of 128 bit? 7F. It would be 7FH. ये अगर नहीं समझ में आया कैसे आया, it is same as जो आपका RAM का एड्रेस था. RAM का एड्रेस starting was 00H और लास्ट was 7FH. क्यों 7FH था? क्योंकि उसके पास 128 यूनिक लोकेशन थे जहाँ पे आप बाइट स्टोर करते थे. यहाँ पे भी 128 यूनिक लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप क्या स्टोर करते हो? बिट स्टोर करते हो. ओके, देयर इज अ डिफरेंस. सो 7FH यहाँ का जो एड्रेस है वो बिट स्टोर करेगा, ये 7FH आपका बाइट स्टोर करेगा. इज इट क्लियर? Yes. So there might be a chance that the memory will get confused or the processor will get confused. For example, अगर मैं बोलता हूँ कि 7 या 55H से या let's say 17H से मेरे को एक डेटा को कॉपी करना है. Okay, I want to copy the data from 17H location. So that 17H पे will there be bit present या byte present, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया सवाल आपको? I have said, I have given an instruction कि 17H से I want to copy the data, but 17H is the address of a byte as well, whereas 17H is the address of bit as well. बराबर ना? So bit का भी एड्रेस है और byte का भी एड्रेस है.
So which will the processor will take the address? So bit address लेगा या byte address लेगा 17H को? वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? It depends on instructions to instruction. Okay. So 8051 में there are total how many instructions? We have 111 instruction. कितने instruction है 8051 में? 111 instruction. इस 111 instruction में से 99 instruction जो है out of 111 instruction 99 instructions are byte instructions, यानी वो byte के ऊपर आप operation perform करते हो. Okay, so 99 instruction out of 111 are byte instruction. How many are left? 99 के अलावा कितने बच गए? कितने बचे? 12. So this 12 are the bit instructions. Okay, so ये bit के ऊपर operation करेंगे. So मोटे-मोटे तौर पे अगर हम example देखें, there was a clear क्या करते थे आप? Bit करते थे या पूरा का पूरा RAM करते थे आप? या पूरा का पूरा एक byte कर देते थे आप? Clear operation was there on what? Bit or byte? Bit. Bit. Okay, so if I mention clear the 17th H, इसका मतलब we are giving an address of bit address. Is it clear? और अगर मैं add करूंगा तो add जो है आप byte पे करते हो ना कि bit पे करते हो. So instruction is self-explanatory that you're working on bit address or you're working on byte address. So the processor won't get confused. So अगर मैं set B करूंगा, if I want to set B on 17th H address, so ये set किसको करेगा? Address को किसको करेगा? 17H के bit को करेगा या byte को करेगा? Set B will do what? It will make the bit go 1 or it will make the whole byte as 1. क्या करेगा ये? It will perform bit operation or byte operation. Set B is a bit operation or byte operation. Bit operation. So it is bit operation. So वो self explanatory है, तो वो क्या करेगा? 17H ऑटोमेटिकली प्रोसेसर को पता है कि हाँ ये बिट ऑपरेशन है, तो ये बिट एड्रेसेबल रैम के पास जाएगा, वहां पे से 17H एड्रेस पे 17H लोकेशन पे जा करके जो भी बिट होगी उसको 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 है तो उसको भी 1 कर देगा. इज इट क्लियर? अगर मैं ऐड करूंगा और उसमें 17H लोकेशन पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा ऐड इज अ बाइट ऑपरेशन. सो वो बाइट के पास जाएगा 17H पे, उस डेटा को दूसरे डेटा के साथ ऐड करेगा. सो दैट ऑपरेशन इज अ बाइट ऑपरेशन, तो पूरा का पूरा बाइट लेगा. इज इट क्लियर? इज बिट एड्रेसेबल रैम एंड जीपीआर रैम क्लियर टू यू? Yes, sir. So what is the advantage of bit addressable RAM? Bit addressable RAM बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि अगर आप बिट ऑपरेशन करना चाहो तो आप बिट एड्रेसेबल रैम का यूज कर सको. सो अगर आपको एक बिट का ही अगर काम है, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द 7 बिट, अगर आप चाहो तो आप बाइट में भी डाल सकते हो, लेकिन दैट इज अ वेस्टेज ऑफ स्पेस, राइट? अगर आपको एक बिट का ही काम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका अटेंडेंस लेना चाहूँ, so that attendance is can be either 1 or 0. अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो 1 हो जाएगा, एब्सेंट रहोगे तो 0 रहेगा. सो अगर ये 128 बाइट का जो अगर आपका बिट एड्रेसेबल रैम है, तो इसमें मैं 128 स्टूडेंट का अटेंडेंस ले सकता हूँ. कैन आई टेक द अटेंडेंस ऑफ 128 स्टूडेंट ओवर हियर? आई कैन टेक, राइट? 128 बच्चों का अटेंडेंस ले सकता हूँ. सो 128 बच्चों का अगर मैंने अटेंडेंस लिया तो कितना स्पेस मेरा वेस्ट होएगा या कितना स्पेस मेरा स्टोरेज में चले जाएगा यूजिंग बिट एड्रेसेबल रैम? इट इज 16 बाइट ही जाएगा. अगर वही मैं हर एक बाइट में स्टोर कर रहा होता आपका अटेंडेंस, तो कितना बाइट चले जाता? पूरा का पूरा रैम मेरा खर्च हो जाता आपका अटेंडेंस यूज स्टोर करने में. सो अगर कोई एप्लीकेशन इफ दे आस्क फॉर बिट ऑपरेशन ओनली, इन दैट केस यू कैन यूज द बिट एड्रेसेबल रैम. अगर वो बाइट बोलते हैं तो आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो. ओके, यू कैन स्टोर इन स्क्रैचपैड, यू कैन स्टोर इन जीपीआर, यू कैन आल्सो स्टोर इन बिट एड्रेसेबल रैम. सो बिट एड्रेसेबल रैम पूरा का पूरा बाइट भी स्टोर कर सकता है. ओके, लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली एक बिट को स्टोर करना है तो वो सिर्फ सपोर्ट करेगा बिट एड्रेसेबल रैम में. इज इट क्लियर? इज द बिट एड्रेसेबल रैम क्लियर टू यू? Is region 2 clear? Yes. Okay.
And then the final region, which is the region number 3, which can also be called as a scratch pad RAM. इसका size is 80 byte. The starting location is 30H and the last location is 7FH. Okay, can anyone tell me what is the exact time right now? 44. Okay, I will just take a quick revision of one minute or 2 minutes. Okay, फटाफट मैं revision करता हूँ. This topic that we have discussed is called as the internal RAM का memory organization. So इसको हम divide करते हैं internal RAM को into 3 different regions. The first region is, come on, tell me the answer. First region is called as General purpose register. general purpose register region. The second region is called as Bit addressable RAM. bit addressable RAM. The third region is called as Scratch pad. scratch pad RAM. Yeah, it is also called as general RAM. Okay, so we have got 3 different regions in internal RAM. The general purpose region, the first region. Okay, so general purpose register, how many registers are there in general purpose register? How many registers are there in 8051? कितने registers है total? General purpose. How many 32. registers we have? We have 32 registers. Okay, so these 32 registers are put into how many banks? Are divided into how many banks? 4. 4 Four. banks, which are bank 0, bank 1, bank 2, and bank 3. At a time, how many bank will be activated? At a given time, how many bank will be activated? Only one. Only One. one. By default, the bank which is activated is bank 0. Just make sure to write down somewhere important, somewhere make it as note. The default bank which is activated is bank 0. Okay, अगर आप कोई और बैंक को activate करना चाहो, with the help of PSW के अंदर there is a 2-bit which is RS1 and RS0. Using those combination of RS1 and RS0, you can select the rest of the bank. Okay, so at a time only one bank will be activated. Each bank will have how many registers into it? हर एक बैंक में कितने registers होते हैं? 8 registers. So that is why the size of the GPR would be 32 byte, because it has 32 registers into it. तो उसका size 32 byte हो जाएगा. So what would be the starting address of the GPR? GPR यानी region 1 का starting address क्या होगा? 00H. Last address क्या होगा? Last address of GPR would be 1FH. 1FH. So ये जो address है, these are address of the registers. So we can call the register by their name, but we can also call them by their addresses. By the name, the problem is that only R0 to R7 can be only accessible, because at a time only one bank is activated. So आप सिर्फ और सिर्फ 8 register को use कर सकते हो out of your 32 registers which are available. अगर आपको बाकी registers को utilize करना है, in that case instead of using the naming of the registers, you will be using their addresses. तो अगर मेरे को bank 3 का register use करना है, अगर मेरा bank 0 activated होगा, I can do that. But instead of using the register name, I have to use the register ka address. Is it clear? Yes. Okay. Then we'll go to the next region. The next region is called as a bit addressable RAM. Bit addressable RAM has a size of, what is the size of the bit addressable RAM? Size of bit addressable RAM is 16 bytes. 16 bytes. Okay? So it stores bit into it. अब वो bit को, हर एक bit को आपका store करता है और हर एक bit को आप address दे सकते हो. So since we have got a 16 bit का size, so total bit कितना होगा? How many bit it will have in 16 byte के space में? How many bit it can have? 128 bit. It is 128 bit. So 128 bit का जो address होगा, the starting address of the 128 bit will be 00H, and the last address of the 128 bit will be, what would be the last address? 7FH. 7FH. So if you give any address to the compiler or to the processor, in that case, it can get confused कि ये bit address है या byte address है, because the address are of same and the starting and the ending address are also same. So there is a chances that it can get confused, but that can never happen, because 8051 supports total how many instructions it supports? How many instructions are there in 8051? Total instructions? 111. It is 111 instructions. So out of 111 instructions, 99 instructions are byte instructions. So that will be performed on the byte data. So byte पे करना है तो 99 instruction है, और बाकी जो बचे हुए instruction, that is related to only bit instruction. So अगर आप कोई भी instruction देते हो, it is self explanatory कि वो bit पे हो रहा है या byte पे हो रहा है. So automatically जो address होगा, it will check what is the instruction type, whether it is byte instruction or bit instruction. अगर वो bit होगा, तो it will assume कि that address is a bit address. Is it clear? Yes.
The last region is called as region 3. Region 3 is called as scratchpad RAM, or yeah, it is also called as a general RAM. The size of the general RAM is 80 byte. The starting address of the scratchpad RAM, what would be the starting address? 30H. It is 30H, and the last address would be 7FH. Okay, so it is generally used for storing any general data that a user has. Okay, इसके अलावा और उसका कोई specific काम नहीं है. Is the internal organization of RAM, is it clear to you? Yes. Okay, I know the diagram is not that beautiful, so I will just make sure कि मैं नेट से या कहीं और से diagram download करके आपके जो classroom है उसमें upload कर दूंगा. Okay, so you can draw the diagram from there. I hope शायद इससे थोड़ा बहुत आप diagram बना सकते हो. Was the diagram confused to you? No. It is clear, right? समझ में आ गया होगा? Yes. Okay, fine. So yeah, so if anybody has a doubt, they can stay over here. Rest of you guys can leave. So it's Saga. अरे यार, कब करने का? अरे यार, मेरे को क्यों नहीं पहले याद क्यों नहीं दिला मेरे को? समय टेक्स्ट किया था, मेरे को लगा कि आपने देखा होगा. अरे तो बोल देता. ठीक है, मेरे को एक काम करना, कल याद दिला, कल याद से. हाँ चलेगा. कल याद से, हाँ, पहले स्टार्टिंग में मेरे को याद दिला दो. So all of you guys who are listening, please make sure कि मेरे को कल याद दिलाना regarding dates, okay? Fine. So those who want to leave, they can leave now. Those who have doubt regarding this topic, they can stay over here. Thank you guys. Thank you so much.